नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। मैं हूं सतीश कुमार दुरिशेट्टी, फैकल्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। आई एम कमिंग विद अ ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूट्यूब सीरीज फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम कमिंग मंडे ऑनवर्ड्स ऑन सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। सो जितने लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के एस्पिरेंट्स है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के एस्पिरेंट्स है, and the students of ECE, those who want to write the instrumentation also as a paper 2, so they can attend these sessions. लगभग मैंने 6 घंटे का सेशंस ले रहा हूँ यूट्यूब पर। सो ये 6 घंटे पर हमको सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके बारे में पूरा विद इन शॉर्टेस्ट टाइम आई एम गोइंग टू गिव द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। सो what are the important topics for this subject, sensors and industrial instrumentation, and what is the topic based weightage we'll discuss here now. So once if you see the syllabus, this is the lengthiest syllabus of the sensors and industrial instrumentation. So sensors and industrial instrumentation is also a industrial subject. ये गेट के लिए नहीं है केवल, अगर आप गेट होने के बाद कोई ना कोई कंपनी को इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछेगा, व्हाट इज सेंसर, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, व्हाट इज टेम्परेचर मेजरमेंट। क्योंकि आपने आईओसीएल को जा रहे हैं और एनटीपीसी को जा रहे हैं, कोई भी पीएसयू जा रहे हैं प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी में, जरूर आपको ट्रांसड्यूसर्स एंड सेंसर्स के ऊपर नॉलेज होना ही होना है, वेदर आप ईसी हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो। Especially when you're attending the process industries like petrochemical industries, fertilizer companies, okay, nuclear fertilizer companies, Indian space research, definitely आपको ये इंस्ट्रूमेंटेशन का कॉन्सेप्ट पर जरूर नॉलेज होना है। ओके, चलो, now if you see the syllabus of the GATE, the weightage for the syllabus is around 10 marks, minimum 10 marks weightage. Minimum 10 marks weightage I'm expecting every year, लगभग 10 to 12 marks weightage is coming, 10 को कट नहीं हो रहा है। So syllabus में देखो, resistive, capacitive, inductive, piezoelectric, Hall effect sensors and their signal conditioning circuits, and a bunch of parameters are there. So starting from vibration, torque, shock, pressure, velocity. So these are the different transducers and sensors. So actually what is the subject? What is the origin of this subject? It is a subject of instrumentation branch which deals with various transducers related to industrial instrumentation, and measurement of temperature, pressure, flow, etc. It integrates a signal conditioning of transducers with analog electronic circuits to make data acquisition systems. So आपको इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में ये लेना है आप। ओके, इंडस्ट्री में जो पैरामीटर्स रहते हैं वो पैरामीटर्स के ऊपर आपको कुछ नॉलेज होना है। सो फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर क्या यूज करते हैं, फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या यूज करते हैं, फॉर मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वाइब्रेशन, स्पेस फिजिक्स, वैक्यूम प्रेशर, बहुत सारा पैरामीटर्स है दुनिया में। सो वो पैरामीटर्स के रिलेटेड क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट्स रहता है, वो पूरा ये सब्जेक्ट में कवर हो जाएगा। गेट के लिए नहीं है, अगर आपने इंडस्ट्री में काम करे तो भी आपका नॉलेज को एनरिच करने के लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, नाउ आई हैव कैटेगराइज्ड दिस सब्जेक्ट, द वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू आई कैटेगराइज दिस सब्जेक्ट। सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इज कैटेगराइज्ड दिस कैटेगरीज: रेसिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, piezo, industrial and miscellaneous. So under the resistive we have a bunch of list, under the resistive we have a bunch of list, under the inductive we have a bunch of list, under the capacitive we have a bunch of list. And industrial instrumentation पर आपको टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, फ्लो पर, ह्यूमिडिटी पर, वेलोसिटी पर, एक्सेलरेशन पर, वाइब्रेशन पर, सेस्मिक पर बहुत सारा क्वेश्चंस आने की चांसेस है। मिसलेनियस बोलो तो रेयरली टॉपिक्स। सो फॉर एग्जांपल इफ यू सी द रेसिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, piezo, these all are one category. Industrial parameters are one category. So if you see the industrial parameters, temperature is one category, pressure is one category, flow is one category, strain is one category, displacement, velocity, pH. So ये पूरा parameters आपके लिए बहुत important है। Okay, चलो, now but actually in addition to these particular transducers, you should have fundamentals of these subjects. I hope all of you are good in networks, network theory and analog electronics. आपका क्वेश्चंस देखे तो, ट्रांसड्यूसर्स का क्वेश्चंस देखे तो, दे विल कम इन एनालॉग एंड नेटवर्क्स कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक अ स्ट्रेन गेज इज कपल्ड इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड विल आस्क यू वोल्टेज डिवीजन रिलेटेड क्वेश्चन। वही स्ट्रेन गेज ऑप एम्प का इन्वर्टिंग फीडबैक में लगेगा एंड विल आस्क यू इन्वर्टिंग ऑप एम्प बेस्ड क्वेश्चन। सो you cannot separate the subject of sensors and transducers with analog and networks. Questions are coming as a combination. Okay, so if you see
These are the various parameters I am going to cover in the upcoming YouTube classes. Next, similarly, inductive per, these are the various parameters I am going to cover in a short span of time. I am going to cover the questions, bunch of PAVQs I am going to discuss. Similarly, capacitive also, RLC is one of the important. Next one, piezoelectric. So under the piezoelectric, वन ऑफ द एक्टिव ट्रांसड्यूसर, इसके ऊपर भी बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है, एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन करवा के हम फॉरवर्ड कर जाएंगे. ओके, नेक्स्ट कम्स टेम्परेचर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन. टेम्परेचर पर आपको आरटीडी आएगा, थर्मिस्टर आएगा, थर्मोकपल आएगा, रेडिएशन आएगा, बोलोमीटर आएगा. सो इसके ऊपर क्या क्या टॉपिक्स है, इसके अनुसार एक एक गेट पीवीक्यू करवाएंगे. यूट्यूब सीरीज पर टाइम कम रहता है, 2 घंटे का सेशन और 2.5 आवर्स का सेशन रहता है. सो इसमें आई वांट टू कवर ऑल दीस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. Next comes flow, one of the important topic of the flow chapter, especially when you go for interviews for IOCL, BPCL, HPCL, production based companies. Definitely आपको fluids and dynamics and उसका measurements के ऊपर बहुत questions आना है. Venturimeter, orifice, nozzle, rotameter, one of the best content I am going to deliver here. Okay, and mechanical people also can study this subject because mechanical people also need to know what are the electrical methods to measure the flow. Okay, chalo. Next comes pressure. After that we are going to discuss the miscellaneous. Okay, after that we are going to discuss miscellaneous list, very rare topics. So the weightage, I am telling you total weightage for this particular topic, weightage is 1 mark, and for this particular pressure topic weightage is 1 mark. Okay, and for this particular topic flow chapter weightage I can expect minimum 3 to 4 marks. Next, temperature also I can expect weightage around 2 marks expected, and piezoelectric 1 mark, and RLC, all RLC together I can expect 3 to 4 marks. So these are the weightages. So coming from Monday, so we are going to start from Monday. So important topics, topic based weightage मैंने दिया था. So on Monday we are going to discuss completely. So please come and we are going to rock in the YouTube session. So please come with a paper, pen and notes and context, and इसके अनुसार PVQs करवाएंगे. So please have a good time with the subject, and after the sensor subjects I will again come back with another subject update. So YouTube series पर आप जरूर attend हो जाओ, and please take the benefit of this particular session, especially for GATE instrumentation students and also those who are willing to write the GATE instrumentation as a paper too. So I wish you all the best, and I will be waiting at the YouTube session for all of you. Thank you.